Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. This lecture is for BBA 2. The subject which we are going to discuss is Business Mathematics. And this lecture is delivered by Ms. Zahra. The chapter which we are going to start is Mathematics of Finance 1, in which we will discuss simple interest in detail. First of all, we will see that what are the objectives of these slides. There are four objectives. Number one is that student will able to find the simple interest by using simple interest formula. Number two is that student will be able to find the maturity value of the loan. Number three is student will be able to convert months into year. And number four is student will also be able to find principal, rate and time using simple interest formula. Moving forward, first of all, we need to know few key terms. That what are the key terms and what are the meanings of these key terms. Number one is the interest. What is interest? Interest is the amount paid or earned for the use of the money. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से लोन लिया है तो उसके ऊपर लोन की अमाउंट के साथ साथ आप उसका कुछ सरप्लस भी पे करोगे, कोई एडिशनल अमाउंट भी पे करोगे. दैट एडिशनल अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट. देन simple interest. Simple interest is when loan or investment is repaid in a lump sum. जब आप एक lump sum में एक bulk में एक amount को पे करते हो उसको हम क्या कहते हैं? Simple interest. Then principal. Principal is the amount which you have initially borrowed or initially invested. या तो आप उधार ले रहे हो किसी से या आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो. इनिशियल जो मेन वैल्यू आप इनिशियली बोरो कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल. देन रेट. अब रेट क्या है? रेट इज अ परसेंटेज जिसके ऊपर आप किसी से बोरो कर रहे हो, एक इंटरेस्ट के ऊपर बोरो कर रहे हो ना आप. अगर आपने लेट्स सपोज 1000 रुपये लिया है तो 1000 पे 10% इंटरेस्ट है तो इट मीन 100 रुपीज़ आप उसको एज एन इंटरेस्ट पे करोगे. तो एक रेट डिसाइड हुआ है दैट इज 10%. उसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं. देन टाइम. टाइम जो है, टाइम इज द थिंग जिस ड्यूरेशन के लिए, इट इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच यू हैव बोरोड या इन्वेस्टेड. टाइम डेज में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है और ईयर्स में भी हो सकता है. नाउ सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला आई जो आपकी क्या है? अमाउंट है. तो इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? P इंटू आर इंटू टी means principal multiplied by rate of interest multiplied by time and the time would be in years. Remember this thing. Now what we are going to start, we are going to find the simple interest using simple interest formula. First of all कुछ चीज़ें हमने माइंड में रखनी है कि ये क्या है? इंटरेस्ट क्या है? I is the amount. P क्या है? Principal is the amount which is borrowed or invested. या तो आपने उधार लिया है या आपने इन्वेस्ट किया है, इनिशियल जो अमाउंट है. रेट क्या है? रेट जो है वो परसेंटेज में होगा. और टाइम क्या होगा? टाइम याद रखना है ये मंथ, ईयर या फिर डेज, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या होता है? ईयर में होता है. और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर्स में है तो टाइम भी ईयर्स में होना चाहिए. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ्स में है तो टाइम भी मंथ में होना चाहिए. इस बात का लाजमी ध्यान रखना है. इफ़ इट इज़ नॉट सो देन द आंसर वुडंट बी राइट. और अगर क्वेश्चन में उसने लेट्स सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मंथ्स में दे दिया है और टाइम ईयर्स में दे दिया है, सो यू नीड टू कन्वर्ट इट इन ईयर्स. आपने हर चीज़ को ईयर में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है. मूविंग फॉरवर्ड, find the interest paid on loan. We have learned that interest is equals to P into R into T. तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल गिवन है दैट इज $1500. इंटरेस्ट रेट इज 9%. कभी भी आपने एज अ परसेंट 9% नहीं आपने पुट करना. यू नीड टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू डेसिमल. सो 9 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.09 and the time is 1 year. By putting it in the formula, interest is equal to P into R into T. Interest is equal to 1500 into 0.09 into 1. So the interest on the loan is $135. Moving forward, this is the course.
You need to solve these two questions and send me back the answer of these. आंसर्स इसके अंदर मैंने पहले गिवन कर दिए हैं, 480 है और द नेक्स्ट वाले का आंसर 675 है. व्हाट यू नीड टू डू इज सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर and send it back to me in a group. Then this is our second objective, that we need to find the maturity value of the loan. Now what is the maturity value? Maturity value is the total amount of money due by the end of the loan period. मतलब आपने एक साल के लिए अगर लोन लिया है तो उसको आपने जब वापस करना है तो आपने टोटल कितनी अमाउंट वापस करनी है. ऑब्वियसली आप अमाउंट वापस क्या करोगे, प्रिंसिपल जो आपने लोन लिया था वो वापस करोगे, उसके साथ साथ जो उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आप पे करोगे. ऐसा ही है ना. सो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. तब इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT. सो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस PRT. प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो 1 प्लस RT. Moving forward, look at this example. Marcus Logan can purchase furniture on a 2-year simple interest loan at 9% interest per year. What is the maturity value? Now we need to find the maturity value. Time is 2 years. Interest is 9%. We need to convert it in decimal. That is 0.09. And the P is $2,500. By substituting it in the formula, we get that maturity value is equal to $2,950. Moving forward, these are again two questions. You need to solve it on the piece of paper for your convenience. I have given the answers of these. Solve it and send it back to me in a group or upload it in a Google class. Now, our third objective is convert months into years. How the months can be converted into year? आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर 6 मंथ्स है तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है. यू नीड टू डिवाइडेड बाय 12. अगर 4 मंथ्स है तो 4 डिवाइडेड बाय 12. इफ इट इज 3 मंथ्स देन 3 डिवाइडेड बाय 12. जितने भी होंगे मंथ्स उनको आपने कन्वर्ट करना है ईयर में, तो आपने क्या करना है, सिंपली यू नीड टू डिवाइडेड बाय 12. Moving forward, look, there is an example. Convert 9 months and 15 months to the years. So 9 divided by 12 is 3 by 4 and 3 by 4 is 0.75 of the year. Similarly, 15 months. So 15 divided by 12, which is 5 by 4 and 1.25 of the year. Simple, आपने क्या किया है, 9 को और 15 को. You have divided these both by 12. तो 12 से डिवाइड करके जो पॉइंट्स में आएगा that would be in the years. Look at this example. To save money, Stan Wright invested $2,500 for 45 months at 3.5. 3.5 means 3.5% simple interest. How much interest did he earn? First of all, आपने क्या करना है, 2,500 जो है वो आपको P आ गया है. 45 months आपने क्या करना है, इसको years में convert करना है. So 45 divided by 12 is equal to 3.75 years. Then 3.5%, तो 3.5 को आप क्या करोगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे. तो 3.5 divided by 100 is 0.035. By putting the values in the formula, we will get that Stan will earn $328.13. Again, this is a quiz for you. Solve these questions and send me the answers. For your convenience, I have given the answer. You need to solve it working. Next and the last one is, our objective is that we need to find the principal, rate or time using the simple interest formula. First of all, what we will do, we will find the principal. Initially हमने क्या किया है, I is equal to P into R into थीटा. तो हमने क्या फाइंड करना है, P फाइंड आउट करना है. तो P फाइंड करने के लिए P को इक्वेशन की एक साइड पे रख लें और बाकी को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर लें. तो P is equal to I over R into T. क्वेश्चन है, Judy paid $108 in interest on loan that she had for 6 months. The interest rate was 12%. How much was the principal? इंटरेस्ट जो है अमाउंट में दे दिया है. जब अमाउंट में दे दिया दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट. तो आई आ गया हमारे पास. 6 मंथ्स है. 6 मंथ्स को आपने डिवाइड करना है 12 से, तो हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा, दैट इज 0.5 ईयर. और इसी तरह इंटरेस्ट रेट है 12%. परसेंट को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट वुड बी 0.12.
So how much was the principal? Put in the values in the formula, you will get the answer, which is $1,800. Second is again rearranging the formula, the initial formula, that is I is equals to P into R into T. So we need to find R. So R को इक्वेशन के एक साइड पे रख लें और बाकी सारे वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाएं. By doing this, so Sam wants to borrow $1,500 for 15 months and will have to pay 225 on interest. तो interest हमें दे दिया है 225, that is I. 15 month is time T, year. So 15 को आपने क्या करना है, year में convert करना है. 15 over 12 and 1500 borrow किया था तो वो P आ गया. By putting in the formula you will get the answer, that is R. और पुट करके आपने क्या फाइंड आउट किया, 0.12. ये पॉइंट्स में है. आप चाहें तो इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो परसेंटेज में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन फाइंड टाइम यूजिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम फाइंड आउट करने के लिए अगेन उसी को हम रीअरेंज करेंगे. तो T इज इक्वल टू I ओवर RP. Shelley borrowed rupees 10,000 at 8% and paid 1,600 in interest. What was the length of the loan? Length means he is asking about the time. T. हमने क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. तो आंसर क्या गया, 2. तो 2 टिपिकली टाइम ईयर्स में है, तो 2 ईयर इज द लेंथ ऑफ द लोन. Now this is the quiz which I have given to you. Solve these questions and send me the answer of this. Thank you.